Hello students, a very good morning to all of you. Today we are going to solving our exercise 10.2 in your page number 136 in your book. Okay, now here we are going to add of the given values in rupees and paise. Okay, so just normal addition we need to do here, that 8 plus 0 is 8, 3 plus 1 is 4, 3 plus 2 is 5, 4 plus 2 is 6, 3 plus 2 is 5. So it will be 565 rupees and 48 paisa. Here it is given 7, 9 plus 2 is an 11, then 6 plus 8, 9 plus 2 is 11, so 1 here, 1 upper carry, 6 plus 1 is 7, 7 plus 8 is 15, 1, 5 plus 1 6, 7, 8, 9, then 5 and 2 6, 7, so 795 rupees and 17 paise. Correct. Here we having 7 to 9, 4 6 and 4 10 and 2 12, 2 here, 1 will be carry forward, 10, then 18, 19, 20, 21, 22, then here will be 23, so 2 will be carry, 3 plus 2 5, 5 plus 2 7 and 5, 573 rupees 29 paise. Okay, now here we going to add 9 plus 7 is 16, 3 plus 1 is 4, plus 6 10, plus 1 11, 1 here, 1 will be carry forward, 5 plus 1 6 and 6 12, 12 plus 4 is 16, 1 carry, 7 plus 1 8, 9 10, then 13, then 2 3 5, 5 and 9 14, 1 4 3 6, 1436 and 16 paisa. Okay, so similarly you need to do all these. In subtraction we can do subtract, like here out of 5 we need to subtract 4, so while subtracting we get 1, out of 3 we need to subtract 2, we get 1. Now from 64 we need to subtract, will be 5, it will be 14, so it will give us 5 and 5, 555 rupees 11 paisa. Correct. Now here in next question we need to subtract that 20, out of 20 paisa we need to subtract 45 paisa. Can we subtract 45 पैसा फ्रॉम 20 पैसा? क्या 45 पैसा हम माइनस कर सकते हैं कभी 20 पैसे में से? नहीं कर सकते. सो व्हाट विल डू, वी विल बोरो फ्रॉम रुपीज़ 1 रुपी. क्या करेंगे हम यहाँ से रुपीज़ कॉलम में से 1 रुपी जो है बोरो करेंगे पैसे के लिए. सो यहाँ से ये 1 रुपी जो है वो कम होगा, 1 रुपी कम होगा, 1 रुपी, और हमें मालूम है 1 रुपीज़ जो है वो किसके इक्वल होता है? 100 पैसे के इक्वल होता है. तो जब हम यहाँ से 1 रुपी बोरो करेंगे तो पैसे के पास जाएगा, तो 1 रुपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैसे में. तो पैसे 1 रुपीज़ इक्वल टू कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे. तो यहाँ पहले से कितने पैसे हैं? 20 पैसे है, और 1 रुपी ये बोरो कर रहा है, इट मीन्स 100 पैसे बोरो कर रहा है. तो 100 पैसे इसके अंदर आएंगे तो कितना ऐड हो जाएगा? ये ऐड होके हो जाएगा 100 प्लस 20, इट विल बी 120 पैसे. नाउ फ्रॉम 120 पैसे हमें क्या सेपरेट करना है? 25 पैसे. सो वी विल गेट हियर 95 पैसे. करेक्ट. Now out of 7 we need to subtract 5, we get here 2. From 3 we need to subtract 1, we get 2. From 4 we need to subtract 2. Okay. Similarly here, क्या out of 27 पैसे हम we can subtract 84 पैसे? No, we can't subtract 84 पैसे from 27 पैसे because 27 पैसे is less amount. So we will take a borrow from this rupees column, 1 रुपी कॉलम, 1 रुपी हम यहाँ से बोरो करेंगे तो 1 रुपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 100 पैसे में, बिकॉज 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. तो यहाँ से हम 1 रुपी बोरो किया, ये 5 हो जाएगा, ये इसमें होके ऐड हो जाएगा कितना? 100 पैसा प्लस 27 पैसा, इट विल बी 127 पैसा.
So 127 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 84 पैसा. So what will be remaining here? It will be remaining here 38, 39, 40, 41, 42, 43. So it will be 43 paisa. Okay. 43 paisa. Now out of 5 we need to subtract 3. We get here 2. Out of 5 we need to subtract 2. We get here 3. Out of 2 we need to subtract 1. We get here 1. Okay. So similarly in this way you need to do all these in your notebook. Okay. Now we need to, from the sum of this and this we need to subtract this. Okay, from the sum of this and this we need to subtract this. हमें पहले इन दोनों का सम करना है, जो आंसर आएगा उसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है. करेक्ट. सो डू, let me show you in our copy. But here what the question is saying that from the sum of this and this, first we need to sum of 715, 30 and 257.80. So 750.30, 257.80, 0. We need to add it sum 8, 9, 10, 11, 1 will be carry forward, 6 and 6, 12, 1, 13, so it will be 3, again 1 carry 5, 6, then 7, then 7, 8, 9. So we'll get here this 973 rupees and 10 paisa. Correct. Now we need to subtract this value. From this value we need to subtract this value. Okay, so right here now subtract 973.10 minus 526.75. So we'll write here 973.10 526.75. So here we can subtract that. Now we knew that out of 10 पैसा can we subtract 75 पैसा. क्या हम 10 पैसे में से 75 पैसा subtract कर सकते हैं? नहीं. So what we'll do, we will take a borrow from 3. It will becomes 2 rupees. It will be become, here it will become what? 100 paisa plus 10 paisa. It will be 110 paisa. Now from 110 paisa में से हमें क्या subtract करना है? 75 paisa. So what we will get here? We get here 25 plus 10, 35 paisa here point. Now out of 2 we can't subtract 6. It will get borrow from here. It will become 6. It will become 12. So here 6, then 4, then again 4. It will be 446 rupees and 35 paisa is our answer. Correct. Now similarly fourth question is your homework. You need to add all these value. इन तीनों को क्या करना है तुम्हें? सब्ट्रैक्ट करना है द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस. पहले इन दोनों को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस करना है. करेक्ट. सो दिस वन विल बी योर होमवर्क. नाउ फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस. क्या करना है? हमें यहाँ पे इन दोनों का सम करना है और इन दोनों वैल्यूज़ का सम करना है. ठीक है. जो आंसर आएगा दोनों का, ये वाला जो वैल्यू का जो आंसर आएगा सम करने के बाद उसको इसमें से हमें माइनस करना. वी नीड टू सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर. ओके. नाउ both are the homework for you. Okay, here do as directed. Add this and this and this. We need to add all the three numbers. Correct. So let me do one question for you. Question number 6, A part, that add. Okay, so क्या ऐड करना हमें? रुपीज़
and paise. Here 45 paise 13 rupees, 27 rupees 09 paisa, then 15 rupees and 67 paisa. We need to add 9 plus 7 is 16, 16 plus 5 is 21, so it will be 2 carry, 4 for 6, 6 and 6 12, 12 2 here, 1 carry, then 3 plus 1 4, 4 plus 5 is 9, 9 plus 6, 9 plus 7 is 16, then 1 carry again, 2 to 4 and 5, so it will be 56 rupees and 21 paisa. Correct? No. Let me do its C part, that subtract 232 rupees 55 paisa from 570 rupees 20 paisa. So what we will write here? Rupees and paisa. 232.55. Okay. We need to subtract from. From is ये पहले ऊपर आएगा. It will be rupees and paisa. 570 rupees 20 paisa 0.55. We can't subtract 55 paisa from 20 paisa, so it will take borrow from here. 6 becomes 10, become 9, it will become 100, 120, 120. We need to subtract 55. We will get here 50. It will be 65 paisa. Then out of 9, if we subtract 2, we get here 7, 3, 10, 3. So it will be 337 rupees 65 paisa. Correct? So this will be our answer. So in this way you need to do complete your exercise. Okay. So this will be completed. So you need to do complete exercise in your